Dear students, today our topic is transpiration. Transpiration is a biological process by which water is lost in the form of water vapors from the aerial parts of the plant. तो ये जो ट्रांसपायरेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी अमल है जिसके जरिए से प्लांट से वाटर लॉस हो जाता है. प्लांट्स लूज वाटर, मगर ये वाटर लॉस जो है it always takes place in the form of water vapors. If water loss is in liquid form, then it's not transpiration, then it's a different process. So you have to remember that during transpiration water is always lost in the form of vapors. Plants absorb water. Plants जो होते हैं they absorb water, मगर जो वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज मच मोर देन दे एक्चुअली रिक्वायर. जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं. सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, मगर वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज मच मोर देन दे रिक्वायर. उसके बाद ये जो वाटर है it reaches the plant and then part of this water is utilized in different cellular and physiological processes. उसके बाद जो unused water है it is lost through leaves in the form of uh, vapors, and that's what we call as transpiration. उसी को हम transpiration कहते हैं. तो ये जैसे हमें लगता है कि why actually plants transpire water, उन्हें एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही क्या है एक्स्ट्रा वाटर. उतना ही वाटर क्यों प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते जितनी की उनकी रिक्वायरमेंट है. ऑल दो हियर यू विल सी दैट इट लुक्स लाइक ये कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी एक प्लांट स्पेंड करता है और just water is lost, but this process transpiration it has significance in plants जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इसकी भी कुछ importance है जिस वजह से plants जो है वो extra water absorb करते हैं, then they transpire it, then they lose it in the form of water vapors. इसकी कुछ importance है. plants यूं ही ये process नहीं कर perform नहीं करते. Now what are different types of transpiration? Transpiration जो है there are three types of transpiration. तीन तरह की transpiration है based on how it occurs. कैसे होती है ये transpiration, कहाँ से होती है ये transpiration. First is stomatal transpiration. First is stomatal transpiration, and it is the loss of water which occurs through specialized apertures which are present in leaves, and they are known as stomata. So leaves have specialized apertures, specialized pores, which are known as stomata. और वहां से जब पानी लॉस हो जाता है, पानी का लॉस हो जाता है in the form of water vapors, then it is known as stomatal transpiration. So it is known as stomatal transpiration. ये stomata के थ्रू हो जाता है. And this transpiration, stomatal transpiration, it accounts for 80 to 90% of the transpiration जो plants में हो जाती है, that is through stomatal transpiration. Okay, so most of the transpiration takes place through stomata. Second transpiration जो है that is lenticular transpiration. So lenticels, they are minute openings in the bark or branches or twigs of a plant. तो इवापोरेशन यहाँ से भी हो सकती है, लेंटिसेल से भी. तो इस तरह इस ट्रांसपरेशन को हम लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन कहते हैं. लेकिन इस ट्रांसपरेशन में ये लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन जो है इट्स वेरी मिनिमम, बहुत कम होती है लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन. ठीक,
तो दिस इज इसके जरिए जो है पानी जो है बहुत ही कम पानी, जैसे कि आपने पहले ही देखा कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है इट अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द ट्रांसपिरेशन, तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम है। नॉनदलेस जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन विच इज द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, इससे वाटर इज लॉस्ट through cuticle. Cuticle provides a relatively impermeable covering. If it is thin and green, अगर ये थिन और ग्रीन होगी है क्यूटिकल प्लांट का, then it can account for 20% of the transpiration. What? This cuticular transpiration. Up to 20% transpiration इससे हो सकती है। मगर लेकिन अगर ये मोटा हो गया है क्यूटिकल, then the transpiration is less. It may be up to 5 to 10% only, as in case of xerophytes plants में जिनमें भी क्यूटिकल बहुत मोटा होता है, then the transpiration is cuticular transpiration is very low. So we have three types of transpiration now. We have stomata transpiration. It takes place through stomata, and it accounts for 80 to 90% of the transpiration. Then we have lenticular transpiration. It takes place through some specialized pores which are present in the branch and twigs, and which are known as lenticels, and very little water is lost through these lenticels. And you need to note that these lenticels, they are not present in all plants. सो जिनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं उनमें लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन, क्यूटिकल से भी ट्रांसपरेशन हो सकती है। अब क्यूटिकल कितना मोटा है या कितना पतला है, उस हिसाब से डिटरमाइन करेगा कि क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन कितनी होगी। अगर पतला होगा देन ट्रांसपरेशन थ्रू क्यूटिकल में अकाउंट अप टू 20%, and if it is agar ye mota hai, then as in case of xerophytes, then the transpiration may be much lower through cuticle, and it may account for 5 to 10% of this transpiration. Now, what are the factors that affect the rate of transpiration? We have external factors and we have internal factors. These are the external factors. Environmental factors, or these are the internal factors. We'll discuss them one by one. First is atmospheric humidity. The rate of transpiration is dependent on the atmospheric humidity. अगर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, then rate of transpiration will be low. Rate of transpiration will be low. और अगर ह्यूमिडिटी कम है, then the rate of transpiration will be high. The rate of transpiration depends upon the difference in the vapor pressure of the internal atmosphere of the leaf and external atmosphere. If the outer air is humid, it will reduce diffusion of water vapors from interstellar spaces of the leaf to the outer atmosphere. अगर अंदर और बाहर जो ह्यूमिडिटी है उनमें वेरिएशन है, अगर बाहर ह्यूमिडिटी कम है वाटर वेपर्स की, तो अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, they will move from their higher concentration to lower concentration. The process of diffusion, जो डिफ्यूजन होगा वाटर वेपर्स की, तो वो बाहर की तरफ होगा। अगर बाहर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज्यादा है, then rate of diffusion will be slow, or the transpiration will be slow, or transpiration may even be stopped. Temperature, increase in temperature will increase the rate of transpiration. टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतने वाटर जो है प्लांट के अंदर दैट विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स एंड इट विल बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट वी हैव टू नोट वन पॉइंट कि जब बहुत ही कुछ दिस प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओनली अप टू सर्टेन
डिग्री, लेकिन उसके अलावा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन स्टोमेटा में क्लोज, or this will lead to decrease in the transpiration. So normally increase in transpiration, increase in temperature will cause increase in the transpiration, but this only applies up to some certain degree. Like after that the stomata may close, which may negatively affect the rate of transpiration. उसके बाद light indirectly affects the rate of transpiration. तो लाइट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली इट इज नॉट डायरेक्टली ऑन ट्रांसपिरेशन, जिस तरह से टेम्परेचर का है, जिस तरह से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, लाइट का इनडायरेक्टली है. लाइट इफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक, या लाइट से की इंटेंसिटी से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है. सो दिस वे if light induces the opening of the stomata, transpiration will increase. If light induces increase in the temperature, then the stomata will open. So indirectly light also affects the rate of the transpiration. उसके बाद wind velocity. अब अगर बाहर से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स है वो ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होती है. अब अगर विंड वेलोसिटी की वजह से ये जो ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक एयर है उसको विंड दूसरी तरफ ले जाती है, तो लीफ के इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वाटर वेपर्स की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है. सो दिस what we call transpiration, it will increase. So a transpiring surface of the leaf continuously adds water vapors to the atmospheric air. Once the immediate area becomes saturated, it reduces the rate of transpiration. लेकिन wind velocity removes the air of the area, which is replaced by fresh air, and results in an increase in the rate of transpiration. समझ आ रहा होगा आपको, जैसा ट्रांसपिरेशन होती रहती है तो एटमॉस्फेयर जो लीफ से वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकलते जाते हैं, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अब सैचुरेशन हो जाती है वाटर वेपर्स की. जो ही बाहर वाटर वेपर्स इंक्रीज होंगे लीफ के बाहर तो ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज. लेकिन अगर विंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, विंड की वजह से जो है ये वाटर वेपर्स लीफ से दूर जाते हैं और उस वजह से दिस एयर आउटसाइड लीफ इज रिप्लेस्ड विथ फ्रेश एयर, जिसमें कि वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, देन द रेट ऑफ दिस transpiration it increases. So increase in wind velocity will increase the rate of transpiration. You have to remember it. Another important point is atmospheric pressure. If the atmospheric pressure is low, it will allow the removal of the water vapors from the surface of the leaves. If it is high, then transpiration will decrease. If it is low, transpiration will increase. These were the external factors that affect transpiration. Then we have leaf area and leaf structure. Chota area है leaf का, then transpiration will be low because there will be less surface area available for the exchange for the release of the water vapors. और अगर leaf area ज़्यादा है then the transpiration will be more. That's why we have xerophytic plants. उनकी जो needle shaped leaves होते हैं, it is to reduce transpiration. उनमें जो उसका जो surface area वो कम हो जाता है, उस वजह से उनमें transpiration जो है वो कम होती है. उसकी इसी तरह से age of the leaf. स्टार्टिंग में जब प्लांट छोटा होता है उसके जो यंग लीव्स होते हैं ट्रांसपिरेशन इज लेस, लेकिन जो ही प्लांट मैच्योर होता है लीव्स बड़े होते हैं, हम लीव्स की बात करेंगे, जो ही पहले जब छोटे लीव्स होते हैं ट्रांसपिरेशन इज लेस, बट व्हेन द लीफ मैच्योर्स ट्रांसपिरेशन इज मोर. लेकिन अब जब लीफ सेनेसेंस की तरफ जाएगा तो ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होती जाएगी. इसी तरह से जो स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है, मैं भूल ही गया था, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं लीफ में, स्टोमेटा कैसे हैं, whether the stomata are sunken stomata or they are present on the upper surface, या नीचे से ज्यादा स्टोमेटा ज्यादा है, ऊपर से स्टोमेटा ज्यादा है, या क्यूटिकल
If the cuticle on the surface of the leaf is thick, then transpiration will be low. Yeah, wax, resin, or sibling coating be. So some aerial parts of plants may also have these coatings, wax, resin, or sibling coatings. So that will also affect the stom this रेट ऑफ ट्रांसपरेशन. इसी तरह से स्टोमेटा का नंबर का भी कुछ लीव्स में कम हो सकता है, तो उस वजह से भी ट्रांसपरेशन कम हो सकते हैं. किसमें ज्यादा हो सकता है तो ट्रांसपरेशन ज्यादा हो सकती है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में. प्लांट्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें थोड़ा ही चाहिए होता है, बाकी ये एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो क्या प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंट ट्रांसपरेशन की प्लांट्स में. ट्रांसपरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जब ट्रांसपरेशन हो जाते हैं, ऊपर से वाटर वेपर्स निकलते जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, वाटर जो नीचे से ऊपर आता रहता है, इट रीच ऑल द प्लांट्स, और इसके साथ मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वाटर के साथ, वो भी पहुंच जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीव्स. It maintains osmosis and keeps the cells rigid. Helps in the upward movement of the water in the plants. It maintains the turgidity of the cells. Cells की जो turgidity होती है, कुछ plants में आप देखो leaves curl हो जाती हैं, फिर open हो जाती हैं, बंद हो जाते हैं leaves, फिर सुबह open हो जाते हैं. It is because of these the turgidity of the change in the turgidity of the cells. और ये जो turgidity है, it is maintained by transpiration. Optimum transpiration helps in the proper growth of the plant. So जितनी optimum transpiration होगी, उस हिसाब से growth भी plants की ठीक ठाक होगी. So cooling effect, transpiration has a cooling effect, जो कि temperature बाहर से जब increase होता है, it can damage the leaves and other cellular entities. तो इस वजह से जब water vapors loss हो जाते हैं in the form of water vapors, तो it gives cooling effect to the tree. So these are some of the points that depict the significance, the importance of transpiration in plants. There are other points while you will see that transpiration has some importance in plants. तो यहाँ पे हमने ये वाले point पढ़े. So this is enough for today. Thank you very much.